ओके हेलो एवरीवन टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ फ्लटर सीरीज। हम इस वीडियो सीरीज के अंदर देखने वाले हैं हम फ्लटर के थ्रू एनिमेशंस कैसे लगा सकते हैं अपने बटन्स के अंदर। हियर वी कैन सी इन दिस एप्लीकेशन इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन, अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, आप ऐसा देख सकते हो इसके ऊपर एक एनिमेशन आ रहा है एंड दिस बटन इज गेटिंग चेंज्ड। ओके, तो हम कुछ ऐसे एप्लीकेशन को ही डिज़ाइन करेंगे और ऐसे बटन को डिज़ाइन करेंगे। So the actually library we will use that will be the Rive. Okay, so Rive dot app. Actually Rive है क्या? So Rive is actually a library, एनिमेशन लाइब्रेरी। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो राइव रन टाइम। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, दैट इज एंड्रॉयड ऑल्सो एंड रिएक्ट ऑल्सो, एंड वन ऑफ आर फ्लटर दैट आई एम गोइंग टू यूज इन दिस वीडियो। ओके, सो हम पहले देखते हैं ये बटन हमें कहाँ मिलेगा। सो एक्चुअली ये मिलेगा नहीं, ये अगर मैं बटन सर्च करता हूँ सबसे पहले यही आता है। सो सिंपल मैं इसी बटन को अप्लाई करने वाला हूँ। ओके, एंड कम्युनिटी, गो टू कम्युनिटी। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि इनकी कम्युनिटी में जितने भी वो डिज़ाइनर्स हैं और डेवलपर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा है एंड यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशंस हैं, तो हम इनमें से किसी का यूज़ नहीं करने वाले। सो लेट्स सर्च फॉर बटन। ओके, एंड just wait. Okay, so at the first we can see the button. Okay, and हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, और हम पहले क्या करेंगे, इसको डाउनलोड नहीं करेंगे इसे, बिकॉज इसके अंदर एक एरर है। वो एरर ये है कि आप इसका बैकग्राउंड देख सकते हो, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसके बैकग्राउंड को हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। ओके, सो हम पहले इस पे रिमिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। मेक श्योर कि आप लॉग इन कर लो। सो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया है, बट मेरी जो फाइल्स हैं वो उसकी लिमिट पूरी हो गई। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओके, मैं खोलूँगा एडिटर डॉट लाइव राइव। ओके, एंड सो यू डोंट नीड दिस बिकॉज जब आप साइन अप करोगे सो आपकी आपकी लिमिट तो रहेगी। ओके, एंड इफ आई गो हियर, वेयर इज, तो आप देख सकते हो मैंने 3 फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हैं, तो मैं पहले इन्हें डिलीट कर लूँगा। ओके, तो ये एक फाइल उनमें से डिलीट हो गई। ओके, सो सिंपली क्लोज दिस एंड रीलोड दिस पेज। तो अब अगर मैं इसको रिमिक्स करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ओके, सो यू ऑलरेडी रिमिक्स दिस फाइल, डू यू वांट टू क्रिएट ऑन द। ओके, तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर रखा था, तभी मैंने ये ऐप क्रिएट किया। तो ओके, हियर यू कैन सी, अगर मैं इस आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँ एंड यहाँ एनिमेट के ऊपर, एनिमेट सेक्शन के ऊपर, सो यू कैन सी स्विच, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक स्टेट है एक्चुअली ये एनिमेशन की। ओके, एंड ये इनपुट के अंदर अगर आप देखो, सो दिस इज टॉगल, और ये टॉगल क्या है, एक बुलियन है। ओके, सो अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँ, ये यू कैन सी एंड टॉगल, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो सिंपली हमें कुछ करना नहीं है, इस टॉगल को कॉल कर देना है अगर बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका जो बैकग्राउंड है उसे हमें ट्रांसपेरेंट करना होगा। सो अगर हम डिज़ाइन के अंदर जाएं एंड लेयर्स एंड क्लिपिंग, लेट मी सी, न्यू आर्टबोर्ड। ओके, सो शायद यहाँ पे है वो। ओके, सो हेयर इट इज, दैट इज फिल्स, और यहाँ पे कलर, सॉलिड कलर फिल किया हुआ है, तो हम उसे नहीं चाहते। सिंपल यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ओके, एंड नाउ हम कंट्रोल एस भी प्रेस कर देंगे बिकॉज आई डोंट नो कि ये सेव, ऑटो सेव होता है या कैसे होता है, एंड हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ओके, एंड डाउनलोड फॉर न्यूस्ट रन टाइम। ओके, सो आवर फाइल हैज बीन डाउनलोडेड, बहुत छोटी फाइल होती है। ओके, एंड वी डोंट नीड दिस राइट नाउ, बट हम इसका यूज करेंगे ये बताने के लिए कि हम कहाँ पे क्या लिखेंगे। ओके, so just minimize this and also close this app because we are going to create a new application inside the VS Code. Okay, so let's go to a folder जहाँ पर हम अपना ये ऐप क्रिएट करेंगे। ओके, सो Rive in Flutter. Okay, so here I will create a new folder. Okay,
and the we don't need to create a new folder. Okay, and simply we will open with code. Okay, and simply press Control Shift P, and you can see Flutter new project, and obviously we are going to make an application, and here is the folder. So create a new folder, and that folder will be Rive toggle animation. Okay, and select a folder, and our name is going to Rive video one, because this is going to first video ऑफ द राइव सीरीज. ओके, सो लेट इट बिल्ड. ओके, तो ये ऐप हमारा बिल्ड हो चुका है, बट हम अभी इसे रन नहीं करेंगे. इसमें हम थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे ताकि हमें बार बार रन ना करना पड़े. ओके, सो गोइंग टू pubspec.yaml. हम यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे इसकी राइव की. ओके, सो इफ आई गो टू राइव एंड if I search for Rive Flutter documentation, and okay here. ओके, अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग के ऊपर जाऊँ, सो यू कैन सी फ्लटर पब एट ड्राइव. ओके, सो सिंपली कॉपी दिस. आप इसे भी कॉपी कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप यहाँ से टर्मिनल ओपन करो. ओके, एंड पेस्ट इट हियर एंड प्रेस एंटर. ओके, ओके, सो the Rive is almost added to our project, and let's make a quick change, that is assets, where we are going to store our Rive file that we have downloaded right now. So हम सबसे पहले इसे uncomment कर देंगे. ओके, एंड यहाँ पे हम इस फाइल का नाम दे देंगे assets, that is Rive assets, and one more slash. Okay, and press Ctrl S. Okay, so all done, and we will create this assets folder and Rive assets folder. Okay, so simply click here in a blank area and then click here new folder assets. Okay, and इस assets के अंदर new folder, that is Rive assets. Okay, and we have to reveal in explorer. So हम देख सकते हैं इसके अंदर हमें अपनी फाइल को रखनी होगी. So simply I'm going to downloads and just copy it and paste it here. Okay, आफ्टर दैट हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली है. अब हम क्या करेंगे, लेट्स मेक क्विक चेंजेस. ओके, सो अभी हम अपने ऐप को रन कर लेते हैं, एंड जब तक हमारा ऐप रन होता है हम इन कमेंट्स को हटा देते हैं. वी डोंट नीड दिस कमेंट्स. ओके, एंड ऑल राइट, इट्स ऑलमोस्ट डन. एंड अभी अभी हमने ऐप क्रिएट किया, सो ये ग्रेडल बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, डोंट वरी. एंड हमारा जो ऐप है वो ऑलरेडी जो क्रिएट हो चुका है, सो हम उसे रिमूव कर लेंगे पहले, बट लेट इट बिल्ड. Okay, so as you can see, we are getting an error with the latest version of the Rive. Okay, so simply rename this, that is 0.9.1. Okay, and simply save this. तो शायद ये वर्क कर जाए क्योंकि ये प्रीवियस वर्जन है. ओके, सो ये हो गया, एंड लेट्स रन आवर ऐप अगेन. सो आई होप इस बार इंस्टॉल हो जाना चाहिए. पिछली बार इसने एक एरर थ्रो किया था, दैट इज समथिंग लाइक NDK, एंड ओके, सो लेट्स सी. ओके, सो एज यू कैन सी हमारी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है एंड ये काम भी कर रही है. सो I will simply remove all these pre-added elements. Okay, so center and this floating action button, and body is remaining. So we will add a button to remain, that is animated button we are going to create. Okay, so simply name it as animated button. Okay, so
this is showing an error, so we'll resolve this right now. Animated button dot dart file, okay, and simply type stl, that is stateful widget we are going to write here. So name it as animated button and go to main dot and simply click here and import. Okay, so this is imported, and as you can see, uh, this is important from the wrong one, so we'll simply remove this and import it again. So import from library, import from, okay, so we'll simply change this one. Okay, because animated button is also available in Rive, Rive library. Okay, so simply name this button uh, check or toggle. Okay, and let's write this again, that is button toggle. All right, so this is auto imported from, okay, प्रीवियसली जो इंपोर्ट हुआ था वो भी सही था, बिकॉज हमने इस प्रोजेक्ट का नाम ही राइव वन रखा था, सो आई डिडंट रिमेम्बर दैट. ओके, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंटेनर रिटर्न तो कर रहे हैं, सो इसे हम एक हाइट दैट इज 100 एंड एक विड्थ दैट इज ऑल्सो 100. ओके, एंड इसका जो चाइल्ड होने वाला है वो होने वाला है राइव dot rive animation dot asset. Okay, and the asset will be actually हम इसे करेंगे copy relative path and यहाँ पे हम इसे paste कर देंगे. and as you can see, यहाँ पे हमारी सारी चीजें आ चुकी है कि हमारा ये जो फाइल है मतलब वो कौन से पाथ के अंदर एग्जिस्ट करता है. ओके, ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट if I move here and move to this toggle, आप यहाँ पे इसे देख सकते हो कंसोल में. अगर मैं इसे रन करूँ, ओके, सो ये एनिमेशन तो रन हो रहा है एंड इस टॉगल को रन करूँ, सो यू कैन सी हियर टॉगल एक्स सेट टू फॉल्स, टॉगल एक्स सेट टू ट्रू. तो यू नो ऑलरेडी कि ट्रू फॉल्स बूलियन में होता है दैट इज बूल. ओके, सो हम यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे. ओके, so here that is smi bool, and no, smi bool नहीं होगा, ऐसा smi input है ये. This is actually a smi input which has a type of bool, smi input that has bool, sorry, bool, and we are not initializing it right now, so we are placing a question mark here, and that is bool, and yeah, button, simply name it as button. Okay, and all errors gone, and we will simply write a function here that will return on the artboard. Okay, so here you can see the artboard that is already created. Okay, so हमें वही कुछ करना पड़ेगा, so let's write that is state machine controller. Okay, and state machine controller, that is अगर हम इसे फंक्शन बना रहे हैं, सो समथिंग लाइक दैट, गेट मशीन कंट्रोलर. ओके, सो हम मशीन कंट्रोलर गेट करेंगे, नॉट आर्टबोर्ड. हम आर्टबोर्ड से मशीन कंट्रोलर गेट करेंगे, सो हेयर पास द पैरामीटर्स दैट इज आर्टबोर्ड एंड आर्टबोर्ड. ओके, एंड स्टेट मशीन कंट्रोलर, that is controller is equals to state machine controller, that state machine. So here the main work start. So इसके अंदर हम वही लिखेंगे जो यहाँ पे हमारे state के अंदर लिखा हुआ है. This is actually the state machine. Okay, so that is switch. Okay, so we'll write switch, and इसके बाद एक हम simple comma press करेंगे, and okay, sorry, हम इसके पहले ही आर्टबोर्ड पास करेंगे जो हम पैरम से लेंगे. अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, नॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज ये काफ़ी बेसिक है. अगर आप 1 2 3 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एंड ओके, ओके, सो हम कंट्रोलर को एक सॉरी, here we have to give the artboard.
हम इस आर्टबोर्ड को एक कंट्रोलर देकर रिटर्न कर देंगे. ओके, सो आर्टबोर्ड डॉट कंट्रोलर, that is add controller. Okay, so here is the controller and return controller. Okay, so we all done. But यहाँ पे एक error अभी बचा हुआ है, that is saying what, let's see. Too many positional argument, artboard cannot be state machine. Okay, so state machine को इसे हम नहीं दे सकते. Why not? We don't want to initialize this right now, but let's see. State machine controller. Okay, so हमें इसे artboard से return करना है, तो हम ये भूल गए थे. Okay, and simply remove this question mark from here. Okay, so add this question mark and add exclamation mark. That means कि ये null check से free होता है. मतलब कभी आप क्या करते हो, कोई ऐसा बटन लगा देते हो, कोई ऐसा फंक्शन लगा देते हो जो इनिशियलाइज नहीं होता. ओके, सो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इट. ओके, एंड इस राइव एनिमेशन के अंदर हम उसे इनिशियलाइज करेंगे. ऑन इनिशियलाइज एक फंक्शन सिंपल से यहाँ पे कॉल होगा. ओके, okay, so actually this p naught is our artboard, so simply write this artboard. ओके, एंड हम यहाँ पे एक सिंपल सा गेट कर लेंगे, जो हमने यहाँ पे गेट मशीन कंट्रोलर लिखा था. ओके, सो फिर से हम ये लिखेंगे, दैट इज स्टेट मशीन कंट्रोलर एंड कंट्रोलर इज इक्वल्स टू गेट machine controller from artboard and done. Okay, so this controller will be something like that, and still this is throwing an error. So let's see why this is throwing an error. Unable to find state machine controller. Okay, so and one more thing, ये जो हमारा है इसे हम फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज ये भी हमें एरर देगा. ओके, एंड स्टेट मशीन कंट्रोलर, ट्राई करेक्टिंग दैट डिफाइन नेम controller and expected to find. ओके, सो ये इसे हम रिसॉल्व बाद में कर लेंगे, बट हमें पहले अपना कोड पूरा करना होगा. दैट इज कंट्रोलर, but let's see why this is happening. And state machine controller, that is get Rive controller, get machine controller and get machine controller from artboard. Okay, and this is returning the controller, so get anim controller and get anim controller, so state machine controller. Okay, and okay, so let's see why this is happening. All right, तो हमें ये नहीं करना था. Fine, and done. Okay, after this controller dot is active is equals to false. हमें एनिमेशन अभी एक्टिव नहीं करना. एंड हमने इस बटन में एक SMI इनपुट दैट इज बुलियन, सो हम इस बुलियन को यहाँ पे फाइंड करेंगे. ओके, दैट इज टॉगल को हम फाइंड करेंगे. ओके, तो सिंपली राइट है इनपुट, सॉरी इनपुट नहीं, दैट इज बटन is equals to find, sorry, controller dot find input, that is toggle x, toggle, and capital X dot okay, that is boolean find input, that is toggle x, and actually this is a boolean, so simply write here bool. Okay, and everything is done, and this button should not run at the initial time. मतलब जैसे हमने इसे ओपन करा था पिछली बार. ओके, सो मतलब हमने ओपन करा था तो मेन्यू का आइकन दिख रहा था. लेट मी ओपन दिस. ओके, सो हमें इस मेन्यू का आइकन दिखना चाहिए. सो बटन डॉट इज एक्टिव,
sorry, button dot value is equals to false. Okay, so इस button की value false होनी चाहिए and surround with null check. Okay, and we'll also place this container into a size box, not size box, that is gesture detector, but that will simple center and gesture detector, and on tap I will add some functions, that is if button is false, that is button dot value. If button value is true, so set it to false. Okay, and if this is false, so set it to true. So true. All right, so our function is done, and we have to add some styles to our container that we will add later. So simply place them into a column, and this column is going to be main axis alignment center, so this will be aligned in the center. Okay, and we'll save this and let's see. All right, so our app has run successfully, but our uh, asset is not showing, so let's hot restart our app and see. Okay, so this is not running yet. Okay, so this is running, but here we can see the color is not visible. Okay, so we'll simply change the color, that is decoration, box decoration, and color, that is colors dot blue. All right, all right, very good. So as you can see, this animation is pretty cool and showing successfully. And if I so click here the cross axis alignment, that is center, and save it here. Please come to center, boss. Okay, and this gesture detector will be in center, and let's see. Okay, we got this in center, and we have to add some that is radius, border radius dot circular, that is 20. Okay, all right, and we got that. So आपने देखा हमने इस एनिमेशन को एक सिंपल तरीके से कैसे ऐड कर लिया. ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस वी विल सी हाउ टू ऐड राइव एडवांस्ड एनिमेशन. सो अगर आप यहाँ पे जाओ, दैट इज राइव डॉट ऐप, एंड इसके अंदर आप देखो. सो लेट मी गो टू कम्युनिटी, एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं. ओके, एंड सो इन सब का स्टेट मैनेजमेंट कैसे होगा, वी विल सी दैट. ओके, एंड यू कैन सी इस बटन में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं. इफ आई सी क्लिक ऑन रिमिक्स, सो अभी हमारा यहाँ पे वो लिमिट रीच हो चुका है, सो विल नॉट सी दैट बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत कूल एनिमेशन यहाँ पे दिखा रहा है. सो हम यहाँ पे कैसे इसे एनिमेट कर सकते हैं. Okay, so we'll see that, and till then keep exploring and keep learning. So this was all for this video. That's all for this video. And अगर आपको कोई error आई है, so you can check the source code in the description. Okay, and वहाँ से आप देखो, and फिर भी समझ नहीं आता, then you can DM me. All links are in description. All right, thank you so much for this video, and meet you guys in next video with new animation in Flutter Rive.